Hello, everyone. Welcome to this session of AMA. And these are very exciting times when we are having a lot of events continuing across the globe. And a lot of events are also coming up over the coming few months, be it elections, be it a lot of clearing out of uncertainties around interest rates, be it inflation and a lot of other things are happening across the globe. So, welcome everyone on this Sunday, and it'll be a very exciting conversation. And I would try to clear out all your doubts and all your questions across this session. You can keep on pinging me in between and asking me questions. I'll try to take up each and every questions. So let me quickly start with what's happening across the globe, first of all, right? And what's happening with the markets, right? So I will keep it a mix of Hindi and English, right? So if you look at the markets, अभी markets में FII long positions 21% है, जो काफी नीचे आई है because of interest rates. And what happens is when interest rates move up, a lot of capital, a lot of passive funds go back into debt funds, into US, right? Like into treasuries, where since the interest rates are going up, the idea is that mostly markets go down when the interest rates go up, right? But and we saw that phenomenon when interest rates, US 10-year bond yields touched 5%, our markets were seeing the pressure. Now, in the last few days, what happened was the US 10-year bond yields came down and came to a level of 4.46. So from touching 5, it came down to 4.46. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि markets again started feeling that breather, that interest rates have peaked and markets started moving up. If you look at the overall markets, global abhi positive hai, FIIs are positive, DIIs are neutral to positive, right? They've been putting in money when FIIs have been exiting over the last three and a half months. FNO abhi neutral hai, sentiment abhi positive और trend abhi positive hai. So see, markets are currently slightly towards the positive side. It is a long weekend. Tomorrow also is an off for the market. So Fridays were a little subdued. So if you look at India 10-year bond yield, it has come up a lot and 7.27% पे आ गया है. US 10-year bond yield 4.46% पे आ गया है. Dollar index, I think again, अगर dollar index ऊपर जाता है तो markets नीचे आता है, right? So we saw over the last three and a half months, we saw dollar index going to 106. जो 101 102 था, like 3-4 months back, it went to 106, which was very high, and that obviously creates a repercussion on the market. But now it is started to move down as well, right? So 103 के आसपास आ गया है. If you look at Brent crude एक बहुत बड़ा support देता है. अगर crude $100 के ऊपर जाता है तो that obviously creates a issue on the market. But we have seen crude oil falling from $95, touching $95, going back to $80. But although हमें लगता है कि long term में crude should go up क्योंकि supply बहुत ज़्यादा increase नहीं हुई है across the globe and there are supply constraints, and we think that with the kind of demand that should come in because of China, because of the consumption that is kicking in India and other large consumers, the crude oil should go up over the near to long term scenario. India volatility index is 11.33 at this point in time. So what major things we are seeing in the markets? So एक तो capital shift हो रहा है physical assets से financial assets की तरफ. ये हम देख रहे हैं कि that a lot of money is coming into mutual funds, a lot of money is coming into markets either through direct participation. CDSL के 10 करोड़ से ज्यादा unique demat accounts हो गए हैं. तो lot of जो एक thought process था that we will invest more towards physical assets, that is changing, that perception is changing, and we are seeing a lot of financial assets coming up, right? And that structural change is going to create a good long-term rally into Indian markets, right? Obviously, we also know that when markets go from a $3 trillion to a $5 trillion, any global economy which goes into that kind of a thing,
you see a very big bump up in the markets, and we are in that trend, right? We are in between that $3 to $5 trillion economy, and that kind of a growth we are seeing, that markets should on a structural basis should do well, right? अगर आप देखेंगे तो ये जो financial markets when they go up, a few beneficiaries who have large holdings into markets become suddenly start feeling rich, and they suddenly start spending a lot on luxuries. So that's what we are seeing: a lot of luxury cars, a lot of luxury houses, a lot of luxury other goods are seeing luxury travel, are seeing a lot of bump up, right? So that sector is going to see a momentum, continuing to see a momentum going forward as well. आरबीआई एंड फेनमिन ने अभी रिसेंटली बोला है कि ये जो अब क्या होता है कि जब व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन एंड राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसके कुछ रेपरकशंस भी होते हैं, राइट? सो अभी क्या हो रहा है कि lot of like lower middle class or poor are also trying to catch up and have been taking a lot of unsecured loans. And recently RBI has said that, hey, you should not you should be very cautious on your on your lending, especially unsecured loans, because there could be stress that could come up because of this sudden rise in the loans, unsecured loans, right? So अगर आप देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि private capex is also seeing the light at the end of the tunnel, and that looks very promising. हमने public capex बहुत देखा कि when government has been spending left, right and center in creating infrastructure across the country, be it airport, port, roads, economic zones. So there have been a lot of emphasis over there, but लेकिन private capex कैच अप नहीं करा था. वो gradually लग रहा है कि कैच अप करेगा. उसका एक रीजन ये भी है कि मार्केट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, because you're seeing companies coming up, doing rights issue, doing IPOs, doing private placements. So companies भी पैसा बाजार से रेस कर पा रही हैं, उनकी कैपेसिटीज भी काफी हाई हो चुकी हैं, and they are seeing that private capex also coming up. तो ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर होने वाला है. अगर प्राइवेट केपेक्स अगर अच्छी स्पीड पकड़ लेता है तो दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट. वी हैव ऑलरेडी सीन गवर्नमेंट giving a lot of incentives, be it in terms of production PLI, be it in terms of reducing the imports or putting import duties on various imports from China, restricting China imports. So there are a lot of emphasis that is there in this regard, right? A lot of other things are coming up. ESG as a theme is catching up, right? Bond deals के बारे में हमने बात करी है. Politics एक बड़ा interesting topic है. We're going to see state election results coming up in the first week of December. That will set the tone for the center elections, and center elections definitely, if there is a stable government, that will definitely be rewarded by the markets, and that tone will be set with the current results coming from states that is going to be announced very soon. Global politics and global geopolitics भी एक काफी major factor play कर रही है politics में, where I think a lot of things are happening. If you look at globe, obviously we all know that Russia Ukraine has been going on, then Israel Hamas has been going on, then a lot of other like tussles keep on cropping up in between across the globe. So these geopolitical events will drive a lot of the markets, and in the near term, as we see over the next 1 year, we are also going to see a very large election in US as well. And उसका भी आप देखोगे कि उसका भी भूमिका बननी शुरू हो जाएगी over the next few months, when you will see a lot of comments coming, a lot of debates happening, etc. So that again will shape up the market. China economy has been facing a lot of headwinds, and they had seen deflation. They have not been able to take come back. They've been pushing a lot the economy. They've been pumping money into the economy, but वहां पे काफी structural changes दिख रहे हैं, and that and even the foreign institutional investors are very cautious in investing in China. So अगर China में cautious है investors, तो काफी allocation India में आएगा, right? So
पैसा इंडिया से मतलब अगर आप एफआईआईज का ट्रेंड देखोगे तो नवंबर 2021 में निकलना शुरू हुआ व्हेन एंड देन फॉर लाइक टिल अप्रैल दिस ईयर, अप्रैल 2023 एफआईआईज का पैसा निकलता गया इंडिया से। फिर देन पिछले 5-6 महीने में बहुत अच्छा पंप किया पैसा एफआईआईज ने इंडिया में। देन अगेन 2-3 महीने हमने देखा कि एफआईआईज ने पैसा विड्रॉ किया। ऑल्दो उस टाइम पे हमने एक काफी मेजर सपोर्ट देखा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, रिटेल का, टू 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 इन्वेस्ट व्हेन एट टाइम्स व्हेन FIIs were taking out money. Now the impact of FIIs on Indian markets is not that significant, right? So that is a very positive for India. Now when the FIIs start coming back, FIIs के पास कोई alternative नहीं है. If you look at FIIs, they do not have much of alternatives. China is not a good alternative for them. There are no large economies which are growing that fast as an alternative to invest. And इतनी high inflation है कि उनको inflation beat करना है तो they have to go into risky asset classes, equities, and they have to go into emerging markets, and India will get a large share of that, right? So FIIs का पैसा वापस आना ही है इंडिया में, and till now domestic institutions and retail has supported, and when FIIs start pumping in money, you will see markets going up to new levels. That is what we feel, right? So काफी structural positives है इंडियन इकोनॉमी को लेके which I would want to talk about, which is energy infrastructure पे हमारा बहुत फोकस रहा है, and be it solar, be it renewables, be it even now they are like wanting to increase the capacities of even thermal energy. तो हमारे एनर्जी की डिमांड और कंजम्पशन और सप्लाई सारी इंक्रीज हुई है significantly. Although demand is very significant because of the kind of activities, the kind of population, the kind of business activities we are doing. But I think that energy infrastructure focus over the years have actually played out. And road port infrastructure बहुत बनाया गया. Budgets देखेंगे recently तो be it mega textile park, be it other focus on infrastructure, metros, public infrastructure, public transportation, lot of focus has been laid on that. Domestic manufacturing को बहुत push दिया गया. I think in these times when we saw COVID and everything, the countries which did not have local domestic manufacturing faced the burn, right? So India had been focusing a lot on domestic manufacturing, and that is actually playing out. There's a lot of investments coming from FDI, from foreign as well as domestic money, and that those investments are going to play out over the coming years, and that is very positive structural change that we are seeing. There's a shift towards financial assets, as I talked about. That is again a very positive for the markets and the economy, because capital markets drive a lot of the economy, and there's a lot of GDP multiplier that comes in. Mutual fund के जो flows हैं that have been very solid, and वही हमारे markets को बहुत ज़्यादा drive भी कर रहे हैं. तो वो भी I think एक काफी positive structural move है. जब हम पहले देखते थे कि म्यूचुअल फंड का पैसा अगर मार्केट गिर रहा है तो विड्रॉ हो जाता था, अब वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, एंड दैट कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली ड्राइविंग द मार्केट्स वेरी पॉजिटिवली. इफ यू लुक एट Q2 रिजल्ट्स, राइट, Q2 रिजल्ट्स हम देख रहे थे तो मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कंपनीज दैट आर देयर इन द पोर्टफोलियो, see, we are a long only fundamental driven fund, and we do a lot of our research. We try to invest in those companies for a slightly like 1 year and above. तो with a multi-bagger kind of a potential. So अगर हम अपने companies को track कर रहे हैं तो मतलब they did very they were on a positive side. हमारे जो company के result आए, chemical sector एक थोड़ा सा prolonged slowdown दिखा रहा है, although we are bullish on chemical sector in the mid term, but currently थोड़ा सा slowdown दिखा रहा है. वैल्यूएशंस वहां पे बहुत अट्रैक्टिव हो गई है इस पॉइंट इन टाइम पे, एंड कैपिटल एलोकेट करने का काफी अच्छा टाइम है. रिसेंटली कुछ चाइना से डंपिंग आई थी केमिकल सेक्टर में, जिसकी वजह से इनको थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आए Q2 के रिजल्ट्स में, बट वी फील दैट केमिकल्स एज अ सेक्टर शुड डू वेरी वेल. सो मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है, राइट. समटाइम IT was very lucrative. Sometime like last 2-3 years, if you look at pharma and chemicals have not done that well. The valuations have gone very attractive. Pharma in particular have started doing very well as a sector. So काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए वहां पे इस बार. हमने ये भी देखा कि मोमेंटम मतलब बनता हुआ दिख रहा है, स्पेशली लार्ज फार्मा कंपनीज में. वो मोमेंटम स्पिल होगा स्मॉल एंड मिड फार्मा कंपनीज में भी. रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए.
तो pharma is definitely a sector where we are keeping a close eye on from a value creation standpoint over the coming quarters and years. बैंकिंग में ऐसा लग रहा है कि जो उसने एक सिंड्रेला मूवमेंट देखा पिछले 1-2 साल में, जहां पे मार्जिन्स भी बढ़ रहे थे, क्रेडिट भी बढ़ रहा था, है ना, तो ओवरऑल एनपीए भी कम हो रहे थे, तो ओवरऑल जो ये एक सिंड्रेला मूवमेंट था वो हमें, मतलब आई थिंक वी आर इन द फैग एंड ऑफ दैट, एंड मार्जिन्स अब यहाँ से स्क्वीज होते हुए दिखेंगे. लोन ग्रोथ पे भी मतलब वी थिंक दैट देयर शुड बी सम लाइक reduce in momentum. So that I think is going to like banking sector I think में अब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब रिजल्ट्स में एटलीस्ट वाव वाले मूवमेंट्स नहीं दिखने चाहिए. आईटी में इश्यूज प्रोलॉन्ग हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि यूएस में देखिए, सी व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप, यू सी दैट लाइक पैसा जब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है ना, तो मतलब वो जो फ्री का पैसा है, जो मतलब वी सॉ 18-20 years फ्री मनी, लाइक 0%, 1% इंटरेस्ट रेट्स, that money went into creating startups, into burning cash, into creating technologies. But those era of free money has gone out, right, for long, for good, right? So what is going to happen is we are going to see, going to see मतलब हाई इंटरेस्ट रेट्स, हायर फॉर लॉन्गर का एक टर्म चल रहा है मार्केट में, दैट इंटरेस्ट रेट्स हायर रहेंगे लॉन्गर पीरियड के लिए, राइट? सो जब वो इंटरेस्ट रेट्स हायर रहेंगे तो वो फ्री का पैसा नहीं है और वो बर्न करने के लिए नहीं है. तो जो इंटरेस्ट लेवल्स थे, जो बहुत ज्यादा पैसा जाता था टेक्नोलॉजी में, वो हमें लगता है थोड़ा सा डेफरमेंट रहेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में, जब तक हमें अनसर्टेनिटी दिखेगी. हम ग्लोबल इंडिया हालांकि बहुत अच्छा कर रहा है, बट डेफिनेटली ग्लोब में कई कई जगह ऐसा भी लग रहा है कि जहां पे आप देखोगे, अगर यूरोप में देखोगे या यूके में देखोगे या आपको कई जगह इश्यूज दिखेंगे कि मतलब परचेज मैनेजर्स इंडेक्स मतलब 50 के नीचे के नंबर्स दिखा रहा है, आपको रिसेशन के चांसेस दिख रहे हैं in those countries. So see, what is going to happen is the IT spenders, the large IT spenders are going to defer their IT contracts. So we feel that those like wow movements for the IT sector are going to see some deferment, and obviously a lot of technology changes are happening across the globe. AI is becoming super big and gaining a lot of momentum, as we all know. So all these things are going to play out for this sector. So we feel that अभी कुछ इश्यूज रहेंगे. स्टील, सीमेंट, ऑटो, इंफ्रा, सबने बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए इस क्वार्टर. तो दिस वाज ऑल अबाउट Q2 क्वार्टर. अगर आप FIIs का देखेंगे तो रिसेंटली FIIs ने कहां कहां बाइंग करी, कहां कहां सेलिंग करी. तो FIIs डिड अ लॉट ऑफ बाइंग इन कंज्यूमर सर्विसेज, दे डिड बाइंग इन हेल्थ केयर, टेलीकॉम, they did selling in power, IT, auto. तो power, IT, auto ने काफी अच्छा किया. Recently they were doing profit booking because they had to take out cash, so they were doing profit booking over there. मैक्रो फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया के वो बहुत पॉजिटिव है, राइट? सो दैट आई थिंक इज वेरी पॉजिटिव फॉर अस, ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स, राइट? तो जैसे पावर कंजम्पशन आप देखोगे बढ़ रहा है, मतलब एंड पावर की डिमांड और भी 7% से ग्रो कर रही है. जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स कलेक्शन, अमेजिंग नंबर्स कमिंग अप. पीएमआई अगर आप इंडिया का देखोगे तो 58.4 था मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, और मैन्युफैक्चरिंग में 55.5 था, which is very positive, right? When the globe is seeing like below 50 PMIs, India is seeing such high PMIs. This is very positive. So domestic, अगर आप IIP growth देखोगे तो 5.8% पे थी. I think that is also very positive. तो अगर आप देखोगे तो although the domestic macro factors are playing out a lot, that is a very positive for the Indian economy, and that continues to stay positive. We've already seen a lot of मतलब इवेंट्स हैपनिंग, जैसे वर्ल्ड कप में बहुत स्पेंडिंग बढ़ी, फेस्टिव सीजन में बहुत स्पेंडिंग अच्छी आई. हम पॉलिटिक्स के इवेंट्स देख रहे हैं जहां पे काफी मेजर स्पेंडिंग आती है एंड काफी मेजर जीडीपी मल्टीप्लायर आता है, स्पेशली रूरल इकोनॉमी से. तो वी आर गोइंग टू सी गुड मोमेंटम कैरिंग इन द कमिंग मंथ्स एज वेल. तो स्मॉल केस में हम क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, राइट? तो स्मॉल केस में वी आर ग्रेजुअली एग्जिटिंग सम स्टॉक्स व्हिच वी सी एज व्हिच हैव रन अप, राइट? तो अब क्या होता है कि मार्केट में व्हेन मतलब प्रॉफिट बुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बट ऑल्दो वी डू नॉट वांट टू बुक प्रॉफिट्स वेरी अर्ली एज वेल, है ना? वी आर लुकिंग एट इंडिविजुअल स्टॉक्स
we are not looking at broader markets. Broader markets में I think there is a lot of juice left. Macros are supportive. Interest rates have gone down. Crude is supportive. मतलब everything is मतलब looking fine. मतलब कोई ऐसा स्ट्रेस या यूफोरिया नहीं लग रहा है मार्केट्स में. तो मतलब वी आर ग्रेजुअली बुकिंग प्रॉफिट्स इन द स्टॉक्स व्हिच वी सी दैट हैव रन अप. हम एक हरी में प्रॉफिट बुक नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमने कोई जगह प्रॉफिट बुक किया एंड द स्टॉक्स मल्टीप्लाइड आफ्टर दैट एज वेल. 2x 3x हो गए उसके बाद भी. We don't want to book profits in a hurry, but we gradually want to book profits for sure, and we are doing that, and we are reallocating that capital into stocks which we feel that as an opportunity is valued comfortably at this point in time. तो इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट. मतलब अगर आप पिछले 6 महीने पहले देखते तो मार्च में देखते तो यू कुड हैव पिक्ड एनी स्टॉक एंड यू वुड हैव मेड मनी. अगर आप कोविड में देखते तो यू वुड हैव पिक्ड एनी स्टॉक एंड यू वुड हैव मेड मनी. बट अभी क्या है कि ये स्टॉक पिकर मार्केट है, तो कुछ स्टॉक्स अभी भी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो दैट्स वेयर वी आर फोकसिंग. तो वी आर रीएलोकेटिंग आवर कैपिटल ओवर देयर. डेफिनेटली जो मार्च में हमें मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, अभी वो उतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है. तो हम इवन वी आर कंसिडरिंग कि अगर हमें कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है तो वी विल आल्सो गो इनटू लिक्विड बीज, एंड दैट यू विल सी इन आवर स्मॉल केस रीबैलेंसेस कमिंग फॉरवर्ड एज वेल, दैट वी माइट गो इनटू लिक्विड बीज एज वेल, है ना. तो मतलब हमें जो हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आई थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन द वैल्यूएशंस. आई वाज लुकिंग एट ऑल आवर स्मॉल केसेस. All our small cases, if you look at the price to earnings versus the benchmark, the price to book versus the benchmark, the dividend yield versus the benchmark, the Sharpe ratio, they are very comfortable versus the benchmarks. And हम यही फोकस करते हैं कि जैसे हमारा एक फ्लैगशिप थॉट प्रोसेस है, हाई क्वालिटी राइट प्राइस. द कंपनी शुड बी हाई क्वालिटी, हाई ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाई and low on valuation. So we keep on reallocating our capital basis where we see that there's a bump up in valuation. We would book profits and go to stocks where we feel that there's a good cushion of valuations. So जब मार्केट गिरता है तो वो cushion of valuation हेल्प भी बहुत करता है मार्केट्स में. तो we are seeing that like overall our portfolios are very comfortable even at this point to create a lot of wealth for our investors going forward as well. And फंडामेंटल जो हम कंपनी से बात कर रहे हैं, कंपनी से मिल रहे हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक कर रहे हैं, फंडामेंटली हमें कोई भी चैलेंज नहीं लग रहा है, एंड दे आर लुकिंग वेरी सॉलिड फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट ओवर द कमिंग ईयर्स. तो डेफिनेटली अगर कोई इवेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाता है या कोई एक इलेक्शन का कोई इवेंट हो जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में इम्पैक्ट रहेगा. बट if you look at the fundamentals of the company, if you look at the growth promises, the expansion that is happening in the company, they are looking very positive fundamentally. Our portfolio companies that I can talk about, right? So what I would say is stagger your allocation, right, towards markets. Overall, matlab, I would want to keep the questions coming in between. I would also this session was more towards what is happening as a transformation and about small caps and mid caps. See, we are a small and mid cap focused research house, and that's where we feel that we can create a lot of value for our investors, right? Matlab, large caps definitely create values. They have created value in the past, but small and mid caps, you create a lot of values if you're doing good stock picking. So that's where we focus, and that's what we wanted to talk about as well. तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि what we think about what is happening as a structural change in the economy. तो एक तो सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो है 5G. हम जो जनधन आधार और मोबाइल का जो एक ट्रेंड चालू हुआ था कई साल पहले, that actually turned out to a lot of digitization, to a lot of digital infrastructure, to a lot of technology. बीट हम यूपीआई के सबसे बड़े मतलब एक तरह से कंज्यूमर बन गए, and those kind of things happened, right? So telecom is again, the 5G is again a very big game changer going forward that we see, and वहां पे बहुत इकोनॉमिक बूस्ट होने वाला है. हम देख रहे हैं क्लाउड आ रहा है, एआई आ रहा है, एज कंप्यूटिंग आ रही है, तो बहुत सारे यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं, राइट? सो and with 5G you'll see lightning fast speed coming up, and we have already seen all the major players launching 5G plans, and you're going to see that spreading out across the country. That is going to have a very big economic boost, because that is going to give fire to a lot of these new age technologies which need high speed, right?
सो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पे बहुत फोकस है। बहुत सारे टावर्स, मोर देन 60% इंक्रीज हुआ है टावर्स के इम्प्लीमेंटेशन में ओवर द लास्ट 5 years। एंड हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में over 12 lakh towers लगाए जाएंगे इंडिया में। That will be very positive, and we are a 1.2 billion user economy, and faster speed and robust infrastructure, faster connectivity will definitely change and will definitely take us to an advanced level in terms of the digital infrastructure, right? And innovation and adoption भी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में आरपूज बढ़ रहे हैं, एआरपीयू जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, या फिर स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम ओवरऑल टेलीकॉम एंड उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट भी होते हुए देख रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर getting themselves accustomed and trained into AI, IoT, cloud computing, etc., etc. तो उससे क्या हो रहा है कि this infrastructure is expanding, right? And this is going to create a lot of jobs, a lot of investment opportunities. We are looking at those investment opportunities. हमने अपने portfolios में भी ऐसी companies ली हैं जहां पे जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही हैं, या रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम बहुत हाई ग्रोथ देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना प्लस वन थीम भी प्ले कर रही है। यहाँ पे इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। इंडिया प्रमोट कर रही है कि आप डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो ऐसी चीजें। तो देयर वी आर सीइंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट आई थिंक इज अ पॉजिटिव। आई थिंक फार्मा का एक $200 billion का एक विजन गवर्नमेंट ने सेट किया है। दैट इज अगेन अ पॉजिटिव। Pharma plays a very large role in India's GDP. We have seen that in COVID times as well. We are a vaccine manufacturer for the world. We are, in terms of generics, in terms of bulk drugs, we are a very significant player, right? So वहां पे चाइना से एपीआई में हमें प्रॉब्लम आती थी, हम एपीआई इंडिया में बनाने शुरू हो गए। हमने पीएलआई स्कीम वहां पे लॉन्च करी। एक आपको मैं स्टैट बताता हूं जो अभी बात कर रही थी गवर्नमेंट, इज दैट फार्मा सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जो मैन्युफैक्चरिंग में, दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू डबल फ्रॉम द करंट 10%, दे वांट टू टेक इट टू 20% फार्मा एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंट्री बाय 2030। तो फार्मा इज गोइंग टू बिकम अ वेरी लार्ज सेक्टर फॉर इंडिया in terms of manufacturing over the coming years, right? And that will be a very large GDP contributor as well. So that's where we are focusing, and वहां पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे पीएलआई में बात करी, मतलब पीएलआई राउंड 1 में 230 कंपनियों ने अप्लाई किया एंड दे गॉट लाइसेंसेस। they are attracting a lot of investments as well, right? Lot of even private equity investments, a lot of mergers and acquisitions, lot of foreign investments is coming into this sector, and we feel that this sector is going to do very well continuing basis over the coming years, right? इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कॉस्ट एडवांटेज है वर्सेस इट्स पीयर्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट दैट वी आर वन ऑफ द लार्ज economies where we are one of the largest contributors of middle class population, of young population to the world, right? And of skilled population to the world. So हमारे पास काफी सारे कॉस्ट एडवांटेजेस आ जाते हैं because of the cheaper resources that मतलब हमारे पास बिजली पानी abundantly and cheaply available है, right? तो उसकी वजह से we are seeing that there is a good cost advantage that India is presenting to the world, right? Be it specialty chemicals में भी हम China plus one theme में we are increasing market share of global exports, right? And India का जो export है that जो export है that is from the chemical sector is projected to double over the next few years, right? So there is a shift from China to India. As we all know, we are restricting our imports and we are increasing our exports. The overall outlook of India as a manufacturing hub is significantly increasing, right? And सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बार बार बात करते हैं कि जब चाइना को अगर आप पिछले 20 साल में 30 साल में देखोगे तो उसने बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो किया। वो क्यों ग्रो किया? क्योंकि दे हैड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद देम,
दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. 1998 में उन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करी, 2008 में उन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करी, एंड दे क्रिएटेड वेरी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर्स. एंड दैट मोमेंटम वी सॉ इन इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? चाहे वो रोड हो, 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम ग्रो करते गए. चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, छोटे एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, हम काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो करते गए. आगे भी बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहे हैं, बट मतलब वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू प्ले आउट सिग्निफिकेंटली. जो पीएम गति शक्ति है, या फिर हाउसिंग फॉर ऑल है, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, मतलब आप देखेंगे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कैच अप कर रही हैं टुवर्ड्स द इंडिया स्टोरी, राइट? सो ये है. इसके अलावा जब इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है तो मेटल, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज तो डेफिनेटली बूम करती हैं. जीडीपी मल्टीप्लायर भी डेफिनेटली सबसे ज्यादा आता है. तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ, जैसे स्टील का हमारा जो कंजम्पशन है 119 मिलियन मेट्रिक टन है आज की डेट में सालाना, एंड दैट इज गोइंग टू गो अप टू 230 मिलियन मेट्रिक टन projected over the next like by 2030, राइट? सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने बहुत ज्यादा बूम देख रहे हैं. तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग अस दैट कॉन्फिडेंस, दैट बूस्ट for our domestic companies to expand, to grow. एक तो पैसा आ रहा है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तीसरा अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना? फॉरेन जो हमारे टाइप्स हैं, जो हम जियोपॉलिटिकल टाइप्स देख रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ. अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा यूके और यूरोप के साथ, कई नेशंस के साथ हमारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हम बहुत क्लोज हैं करने के. हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, हमने यूएई मिडिल ईस्ट के साथ किया. इसी तरीके से हम बहुत क्लोजली एक जो ग्लोबल रीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वहां पे हम लोग बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं कई सारी अपनी अच्छी जो जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उन कंट्रीज के साथ. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली contributing towards our growth, right? अगर आप मतलब ओवरऑल वैल्यूएशन देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप की, आई थिंक दे आर कंफर्टेबल वर्सेस द लॉन्ग टर्म एवरेजेस, एंड हमारा पोर्टफोलियो तो और ज्यादा कंफर्टेबल है इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, राइट? मतलब एक काफी सिग्निफिकेंट अब क्या हो रहा है कि आज की डेट में लॉट ऑफ आईपीओज आर आल्सो कमिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप्स, राइट? वी आर सीइंग एसएमई आईपीओज, वी आर सीइंग स्मॉल कैप आईपीओज. बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यू एज बिजनेसेस जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, एक डिसेंट लेवल पे पहुंच गए, दे आर कमिंग अप इन द मार्केट and with unique business propositions and giving investment opportunities, right? हम कुछ SME कंपनीज भी खरीदते हैं अपने PMS में, या हम कुछ जो कंपनीज SME से मेन बोर्ड माइग्रेट करती हैं, मेन बोर्ड में रिसेंटली छोटी मार्केट कैप से लिस्ट होती हैं, वहां पे भी हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. तो काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज निकल के आ रहे हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनीज आ रही हैं, जैसे ड्रोन की कंपनीज आ रही हैं, AI की कंपनीज आ रही हैं, VFX की कंपनीज आ रही हैं, डिफेंस की कंपनीज आ रही हैं, ESG ओरिएंटेड कंपनीज आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज आ रही हैं. अब इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक अलग लेवल की ग्रोथ देख रहा है अपने तो राइट. सो अ लॉट ऑफ वैल्यू माइग्रेशन इज गोइंग टू हैपन इन दीज type of companies, and they are mostly small caps and mid caps at this point in time, right? So that definitely makes a case that वहां पे अच्छा ऐसी कंपनीज जो आ रही हैं वहां पे वैल्यू ऑन द टेबल इज आल्सो बीइंग लेफ्ट बाय द प्रमोटर्स इन दीज टाइम्स, राइट? सो दैट्स व्हाई दे आर बीइंग रिवॉर्डेड बाय द मार्केट्स एज वेल when they get listed. So a lot of opportunities are coming in this space, and you have to keep a close watch, because जो नई एज की जो कंपनीज हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप है mostly, right? So we feel that these upcoming sectors are going to see a lot of value migration. We see that pharma as a sector is going to see a lot of value migration over the coming recent years. Cement, telecom, electronics, PLI oriented sectors, I think those sectors are going to see a lot of value creation and a lot of value migration. जो हम देख रहे थे कि IT एक बहुत ज्यादा value creation, value migration करके गया पिछले 15-20 साल में, हम देख रहे हैं ये न्यू एज सेक्टर्स, फार्मा, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, PLI, ये सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में. तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप डेफिनेटली अब ऐसे जो स्टॉक्स हैं इसमें यू नीड अ लॉट ऑफ you need to track these companies closely, right? Because the information available, the research on these companies, is not that significant. You have to keep a close track
on the promoters, on the corporate governance, on the quarterly performance, on the growth plans, on the executions. So you have to keep a close track on these companies, but a lot of value creation, a lot of wealth creation can happen through these companies in the. So that's where we are focusing through our small cases as well, right? So we want our investors to create wealth, significant wealth in a disciplined manner over the years. So that's what we say, that आप gradually invest करते रहिए, आप SIPs के through invest करते रहिए, आप ग्रेजुअली स्टैगर करिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एंड टाइम दीजिए इन इन्वेस्टमेंट्स को. दीज इन्वेस्टमेंट्स, इफ इवन इफ यू लुक एट आवर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज, सम इन्वेस्टमेंट्स डिड एकदम से मल्टीप्लाई हो गई, कुछ इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ी सी शायद नीचे आई, देन दे मल्टीप्लाइड. So you have to give these investments time, and these investments would do very well. We are keeping a close track. Our research house, you've seen our performance as well. So that's what is happening. I'm happy to take questions. Yeah. So Sumukh is asking that, can Indian chemical companies sustain the dumping of chemicals by China after reopening? Will the margin impact and compete with China? See, definitely there is a dumping possibility, and there is dumping happening as well that has impacted the margins. एक तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया एक बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर है इनटू केमिकल कंजम्पशन, राइट. सबसे बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए ये है कि हम चाइना से इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट कर दें, एंड वहां पे हम बहुत ज्यादा फोकस देख रहे हैं, राइट. सो इफ यू आर लुकिंग एट cutting down the imports from China, that is a very big major opportunity, $1 billion opportunity for a lot of small cap, mid cap companies, right. Uske beyond, we are seeing reallocation, like a lot of countries through free trade agreements are purchasing from India, and we are continuously going into that zone where rather than buying from anyone and everyone, we are going to see FTAs, right. तीसरा मतलब, obviously even if there is dumping for the short term, in the long term there is going to be a आप डंपिंग से सस्टेन नहीं कर सकते, राइट. हमारी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि आप स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करो और अपनी कॉस्टिंग कम करो, तो आप डंपिंग से सस्टेन नहीं कर सकते, राइट. तो हमारा डोमेस्टिक में कंजम्पशन, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म डंपिंग कैन नॉट सस्टेन, राइट. एंड आर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग रही हैं या इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, दैट दे आर गोइंग प्लेइंग आउट वेल. So I feel that yes, there could be impact in the short term, but in the mid term and long term there will be very positive. And उसके anticipation में आप देखो, ये जो dumping के anticipation में the prices have gone down very well, right. तो हमने कोविड में opportunity देखी कि यार every asset fell down like anything, but anybody who would have invested in those stress times had done significantly well. So अगर chemicals में वो पॉसिबिलिटीज हैं डंपिंग की, तो वो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग की, है ना, क्योंकि यू आर सीइंग दैट द वैल्यूएशंस हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. So definitely if you are a long term investor, gradually allocation into certain stocks could make sense, right. When will the portfolio update, and is it a good time to add lump sum? See, we are continuously evaluating. A couple of our small cases are going to see updates. MNC में update देखा जाएगा अभी recently in the coming week. But we would if you look at our HQRP dividend small cap, we did updates recently. तो मतलब I am looking at updates somewhere around December, January, right. We'll keep you notified. But if you want to add lump sum, what I would say is you should be adding gradually, right. You should be adding, I think, every time. मतलब मैं at the expense of saying that, but every time as an investor you should try to stagger your investments, right. You should do SIPs. अब ये जरूर हो सकता है कि मैं स्टैगरिंग क्विकली कर लूं, कि जैसे मैं, अगर मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी में मार्च वाला टाइम, मार्च 2023 वाला टाइम है, तो आई वुड एग्रेसिवली स्टैगर. और देयर वुड बी टाइम वेयर द वैल्यूएशंस आर स्लाइटली स्ट्रेच्ड, तो मैं आई वुड ग्रेजुअली स्टैगर,
right? But staggering is very important. So I think you should stagger your allocations to these small cases and do it for a long term. Definitely you are going to, and you've already seen the wealth creation, right? So Sumuk is asking, if market doesn't like election results, how much time it might take to recover? See, elections को अगर आप देखोगे तो मतलब इलेक्शंस का हमने जो हिस्टोरिकल ट्रेंड देखा है, दैट दे क्रिएट शॉर्ट टर्म, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट माइट गो एनी डायरेक्शन, राइट? समटाइम्स इफ वी सी अ गुड rally before the elections, even despite good results, we might see a fall for the next few months, or sometimes opposite also happens. So uska impact can be unpredictable, first of all, right? Second, election say matlab, see, we have built the momentum as a nation, right? And any like unless and until it's a fractured mandate hoga to definitely yes, a lot of conviction of domestic institutions or foreign institutions will go down, right? And that will see exodus of capital over the coming years. But the momentum that we have already built in terms of creating the infrastructure, in terms of the demographics that we have, in terms of the China plus one, all the things, right? So जो हमने एक momentum बना लिया है, वो तो continue करेगा, right? So definitely election की अगर fractured mandate आ जाता है, या भाई existing ruling party doesn't win or something like that, so it could create a short term impact, but long term I don't think there should be any impact. So market might take 3 months 6 months to fall, but ये भी opportunity देखी जाएगी, right? मतलब see, as an investor I cannot sit out of the market. मतलब आप मतलब अगर sitting out of the market is not suggested, because see, एक तो हम अगले 10 साल बहुत significant growth देखने वाले हैं, right? Second, आप बिल्कुल टाइम नहीं कर सकते मार्केट्स को. मुझे नहीं पता इलेक्शन रिजल्ट खराब आएंगे, हो सकता है मार्केट चढ़ जाए, राइट? हमने ये बहुत चीजें देखी हैं, राइट? हम पहले कभी सोचते थे कि रशिया यूक्रेन, पहले हमें लगता था कि कुछ नहीं है, मार्केट वाज डूइंग वेल टिल फेब 2022. देन फिर एकदम से लगा कि पता नहीं वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, देन एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग लाइक एनीथिंग, है ना? सो एंड इवन टुडे द वॉर इज कंटिन्यूइंग एंड द मार्केट्स आर डूइंग वेल. सो सी, मार्केट्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस मूवमेंट पे कैसे रिएक्ट करेगा. फॉर योर सेक यू हैव टू स्टे इन द मार्केट, यू हैव टू स्टैगर योर एलोकेशंस, एंड जब आपको ऐसे मौके मिले दोनों हाथ से खरीदो, है ना? मतलब यू हैव टू टेक बेनिफिट्स ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज you don't know, you cannot time the markets perfectly, right? So you might go out of the markets and you might see that the markets are still going up, right? So ऐसा हमने कई लोगों के साथ देखा, वो वेट ही करते रहेगा कि मार्केट गिरेगा तब खरीदूंगा, तो वो खरीद ही नहीं पाए, right? So that is the thing. So Kiran wants to ask, if I want to invest more in our small case, do we invest in stocks that have dropped in value, or do we invest in stocks that have stocks in the small case, or do we invest in all the stocks in the small case? How do we decide? See, as a retail investor, right? See, अगर हम 20 stocks का portfolio क्यों बनाते हैं? हम एक, अगर आप लार्ज इन्वेस्टर्स को देखोगे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, दे रन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, 5 stocks 10 stocks, and they do a very large bets in these stocks. म्यूचुअल फंड को देखोगे तो ओवर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी करते हैं, 70 stocks 80 stocks, right? So we do somewhere in between, right? 15-20 stocks, right? So we want our investors to make money. Over diversification से भी आप पैसा नहीं बना सकते. अगर बहुत concentrated चलोगे as a retail investor, that doesn't solve our purpose. So that's why we create a 20 stock portfolio, right? And those 20 stocks, some stocks might do exceedingly well in the short term only. Some stocks we might take time to perform. Some stocks might even go negative, right? Because a lot of factors are playing. कई बार क्या हुआ, अब जैसे यूएस में इश्यूज हुए, तो पेंट स्टॉक्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, क्योंकि यूएस में हाउसिंग में प्रॉब्लम्स आई, तो उनको प्रॉब्लम्स आ गई. तो सम थिंग्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट? सम थिंग्स, एक हमारी कंपनी है, उसका रशिया में प्लांट था, रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो वो रशिया के प्लांट की वजह से स्टॉक गिर गया, राइट? सो सम थिंग्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, राइट? सो
So rather than like concentrating your portfolio, and I would suggest that go in a disciplined manner. राइट पोर्टफोलियो में हम अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करते रहेंगे. इफ यू like as an investor, keep it very disciplined and keep it very simple, right? If we were to invest, just keep on investing in that sense. अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एज अ रिसर्च हाउस वी आर टेकिंग आवर एक्शंस, राइट? अगर हमें लगता है कि कोई रेड फ्लैग है, वी विल एग्जिट. अगर हमें लगता है कोई स्टॉक में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बम्प अप हो गया है, वी विल एग्जिट, है ना? तो हम अपना काम कर रहे हैं एज अ रिसर्च हाउस, and we are giving you the best stocks in the portfolio, right? So using technology, like you should like rather than trying to pick a few stocks, just go by the small case is what I would suggest, right? So Akash is saying that I have been an investor of HQRP more than a year now. I want to know the strategy weights, as your strategy weights when they are undervalued and they are getting invested into years. How you see stocks going forward? See, as I talked about, see HQRP, having said that, मैं मतलब साथ साथ returns भी खोल लेता हूँ. तो हमारे हाई क्वालिटी राइट प्राइस ने पिछले एक साल में मतलब पिछले 4 साल में तो ऑब्वियसली 51% सीएजीआर दिया है, बट पिछले एक साल में भी हमारे हाई क्वालिटी राइट प्राइस ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिए हैं. I'll just be quickly updating you, yeah. So high quality right price over the last 1 year has also given 31% returns. I think see so I think even despite investing in undervalued stocks, we have done like very well. And I think that if you look at our current portfolio, I'll just quickly open the portfolio as well. If you look at our current portfolio, so I was talking about telecom, I was talking about pharma, I was talking about cement, I was talking about steel, infrastructure. We have everything in the portfolio, and despite being undervalued as a small case, and all these companies that we have taken in the portfolio comes from very renowned business houses, right? So we believe that these companies are going to definitely outperform, and we are going to see the kind of returns we have seen across our small cases. ये जरूर होगा कि कभी स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर जाएगा, कभी एचक्यूआरपी बहुत अच्छा कर जाएगा, कभी डिविडेंड बहुत अच्छा कर जाएगा. दिस माइट हैपन, बट we believe that and personally I feel that high quality right price should do very well in the coming couple of years, because the kind of stocks that we have in the portfolio, I am personally very gung ho about them, right? So HQRP will definitely outperform further, even more from here over the coming 1 or 2 years. So, see, NRI ME is asking, sir, what will be the performance of PSU banks? See, first of all, we do not invest in PSUs. Overall, we do not invest in government companies, right? Because we feel that over there, any time, any not for profit project can be given to these like हम देखते थे बैंक्स को farm loan दिलवा दिया जाता था. They were asked to give farm loans and they were asked to waive farm loans, and lot of such not for profit politically motivated projects were handed over. And the wealth creation over long term in the PSU banks over long term, over the last 1.5 years, 2 years, yes, the wealth creation happened, but over long term, the wealth creation in these companies is not significant, right? So the idea for our investments, even some of them might give good dividends. Some of the government companies or some of the government companies might look very lucrative on the valuations or on the price to book or something. But the long-term wealth creation in these companies is not that significant, right? So and our main motive is wealth creation, right? So first of all, we do not invest in these companies. Having said that, definitely the valuations still look cheap.
Definitely, there could be some more run up over the coming quarters, but that will be mostly a trading bounce, and I would not be able to comment on that. See, potential of private wealth companies. See, as a country, we are seeing very large, significant allocation going into financial wealth now, and we are seeing a lot of HNIs coming up. A lot of people are increasing their earnings capacities. A lot of wealth is being created through selling of assets, be it real estate assets that have gone up, or be it ESOP stock assets. So a lot of wealth is getting created, right? And private wealth is definitely a very large potential for the country, and definitely a lot of large players look very interesting over there. But having said that, the valuations are very high in some of these companies, right? So yes, definitely AMC also as a business is very lucrative because it's an annuity kind of a business, right? So the potential is very significant. I hope I answered your question. See, green parrot. So the electric mobility as a future is we are very gung ho about that, and we are investing. We have been talking about electric mobility across our communications to investors. If you, I would also suggest you guys to follow our YouTube channel, to follow our LinkedIn, to get regular updates. We give our newsletters to investors. We give communications through short videos, through long format videos. We do sessions every almost every fortnight to talk to our investors. So do follow our channels is what I would say. So see, electric mobility we are very gung ho about. As there is very high focus on reducing the oil bill, as we might see the oil price, which have been very subdued over the last, especially 1-2 years, could go up again and could cross $125. There's been obviously a lot of supply. Lot of supply has not been built, and alternatives is definitely is what the government is also focusing on, right? And we are seeing increasing infrastructure creation in electric mobility, right? We are seeing infrastructure creation in terms of charging stations in across the country. We not only the four-wheelers or passenger vehicles, we are also seeing electric mobility coming up in some of the trucking and buses, large vehicles as well, right? So commercial vehicles are also seeing electric mobility now. And I think this two-wheelers and passenger vehicle started this ecosystem, and this ecosystem is going to increase big time in country as we see the prices of electric mobility coming down. The future is definitely there, and a lot of companies that are working in the space, we are keeping a close track, and some of them we've been investing in them as well, and we have them in the portfolio as well, be it in terms of battery, be it in terms of creating electric vehicles or other infrastructure. So we are definitely keeping a close track on those companies. See, Shivam is asking that do you think that green portfolio will remain consistent for the next 6 to 12 months, growing with above 75% CAGR? See, Shivam, 75% CAGR is pretty significant, right? I think as an alternative, what is the alternative for consistently creating capital, right? So stock market overall is a mechanism to consistently create significant returns for investors. Even if you look at Warren Buffett, he compounded his wealth at 19-20% across his life. But what he did was consistency and a large capital allocation, right? So उन्होंने 19-20% पे अपना पैसा कंपाउंड किया और उन्होंने इतनी सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट करी. तो अगर हम 75% CAGR की बात करते हैं तो डेफिनेटली सी देयर वुड बी सम इयर्स वेयर यू वुड सी वेरी सिग्निफिकेंट कैपिटल क्रिएशन. सी व्हाट आई कुड से इज if market is delivering 20% returns, I would try to
create a significant alpha on those 20% returns. We would create an alpha on the market returns. I cannot, like, agar if the markets are falling, I might fall, but I should be falling less than the market. That is my target as a research house, right? So yes, what we have delivered is actual, and what we have delivered will be repeated, can be repeated for sure. But if you have expectation of 75% CAGR, it is not justified, because for though, and that will not be, see, as an investor, we want to create consistent wealth, and we do not want to lose our wealth, right? So we have to like reduce the risk in the portfolio. We have to diversify. We do not have to over concentrate. We do not have to leverage, right? All those things taken care. Delivering 75% consistently is not that easy, right? So you have to, the only thing I would say is just stay invested, diversify, and do it with a discipline, and do it for a long period over the years, and keep on investing through a staggered manner. You would end up creating a lot of wealth for yourself, right? So that is the thought process. See, somebody is okay. So Digvijay is asking that what is the average market cap of Samvat to 2080, and what is the key stock selection approach? So see, we have two small cases in Samvat, right? We have a mid cap small case, and we have a small cap small case. So both the small cases. So small case would have a average market cap of around 2000 crores, and mid cap small case would have a average market cap around 7-8,000 crores, right? So why do we create Samvat small case? A lot of our investors, especially during Samvat or during Diwali, a lot of our investors want to allocate fresh capital and want to know which are the best stocks to invest at this point in time. What do we feel? So we create a slightly concentrated portfolio, which is a top-up portfolio for our investors, right? So you can top up your investments through the Samvat portfolio, like, and invest that extra amount during this period using this small case. So that is the thought process of creating Samvat small case, right? It's a top-up portfolio. Having said that, our core portfolios remain the ones that you see regularly on our publisher page, right? So that is what I want to say about. Having said that, Samvat portfolio, there might be a few additions to our existing portfolios, and this is, we have picked the best stocks that we feel that that would at this point in time for a fresh allocation of capital, right? So what happens is, हमें हर टाइम पे मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक हमने खरीदा, दैट 100 रुपीज स्टॉक वेंट टू 150, we might but there are certain stocks where that 100 rupee stocks, or we have recently added that stock, or that 100 rupee stock has not gone up, so we feel that these stocks, hey, these stocks look very attractive at this point in time for allocation of fresh capital. So for Samvat, we have picked a bouquet of such stocks, right? See, Bhushan is asking about Valiant Organics. Yes, definitely, it has been a disappointment for us. But having said that, we feel that the expansion that they have done should play out. The valuations is still very comfortable, and the stock should do well from here. So we are keeping a hold on that stock, and we are keeping a close track, be it in terms of like visiting the plant, or be it in terms of tracking the company on quarterly results. We feel that Valiant Organics should do well from here. But yeah, overall, pharma, chemicals, specialty chemicals as a sector, as we talked about over the last few years, have not done well. As a result, things should improve here on, and we are like targeting a positive Q3 and Q4 for the company. So प्रशांत इज आस्किंग कि सर 7-8 स्मॉल कैप और मिड कैप के आधार पर कोई पोर्टफोलियो क्या आप लॉन्च कर सकते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हम एक काफी
मतलब एक तो 7-8 स्मॉल कैप के अगर और मिड कैप के लिए अगर आपको हमारा स्मॉल केस चाहिए तो हमने संवत स्मॉल केस लॉन्च कर रखा है। आप वो स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इसी तरीके का ही पोर्टफोलियो है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, एक टॉपअप पोर्टफोलियो है। आप उसमें स्टैगर भी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी अ चैलेंज इन दैट। बट हैविंग सेड दैट, मतलब वी वुड स्टिल वांट टू क्रिएट आवर फ्लैगशिप इज स्टिल द वंस दैट आर देयर ट्रेडिशनली, राइट? वहां पे हमें लगता है कि एक 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड वहां पे मतलब रिड्यूसिंग द पोर्टफोलियो रिस्क, हम एक सिग्निफिकेंट कैपिटल, हम एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो 7-8 स्मॉल कैप में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो उस हम एज अ थॉट प्रोसेस, क्योंकि हमारा एज अ फंड रिसर्च हाउस हमें बहुत सारे नजरियों को देखना पड़ता है, rather than only having a very high risk or a very concentrated portfolio, we want to reduce the risk on the portfolio as well। तो इसीलिए तो आप अगर आपका 7-8 स्मॉल केस और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स लेने का मन है, तो आप हमारे संवत स्मॉल केस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। At this point we see very so Varun is asking, at this point, do you see large caps, especially banks, chemicals, pharma and consumer durables, being undervalued as opposed to the small caps which have given consistently long run up? See, Varun, definitely some of the large caps look attractive. We are also looking at them, and we might also add them in our high quality right price soon। बट हैविंग सेड दैट, लॉन्ग टर्म में पैसा देखिए, सी इट्स अ स्टॉक पिकर्स मार्केट rather देन, मतलब मैं इसे जनरलाइज नहीं कर सकता कि मैं लार्ज कैप्स में पैसा लगाऊं कि स्मॉल कैप में। मैं कहूंगा कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है, और हमें जहां जहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो स्मॉल कैप में भी कई जगह बहुत अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी अभी है इस पॉइंट इन टाइम पे भी। आप हमारा भी अगर आप देखेंगे स्मॉल केस, मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल देता हूं, राइट? सो लेट मी टॉक अबाउट हाई क्वालिटी राइट प्राइस एंड स्मॉल कैप कंपाउंडर्स, जस्ट अ सेकेंड। सो स्मॉल कैप कंपाउंडर्स में अगर आप देखेंगे, इक्विटी स्मॉल कैप का जो प्राइस टू अर्निंग है 28 का है। हमारे स्मॉल केस का, स्मॉल कैप कंपाउंडर्स का आज की डेट में, डिस्पाइट सच अ गुड परफॉर्मेंस, आर प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ द पोर्टफोलियो इज 18 टाइम्स। The price to book value of the equity small cap index is 3.57 times. Despite that, our price to book value of our small case is 1.81 times. तो इसी तरीके से आप कोई सा भी हमारा स्मॉल केस उठा के देख लो, you will see a very significant difference in the valuations of the index versus the valuation of our small case। डिविडेंड यील्डिंग का मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड यील्डिंग इक्विटी स्मॉल कैप का बेंचमार्क प्राइस टू अर्निंग्स है 28 टाइम्स। आर प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ द पोर्टफोलियो इज 13 टाइम्स, and the dividend yield of this portfolio is 5.84 times। So अगर आप देखेंगे, मतलब सी इट इज अबाउट स्टॉक पिकिंग, एंड आई थिंक दैट दीज आर टाइम्स वेयर यू हैव टू बी वेरी selective on your stock picking, right? And I think a lot of even the you have to look at the new listings as well। I think a lot of new listings are leaving a lot of value on the table, and वहां पे भी हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है इन्वेस्टमेंट करने की। तो यस, लार्ज कैप्स में डेफिनेटली कुछ पॉकेट्स इंटरेस्टिंग लग रही है और कुछ पॉकेट सस्ती लग रही है, बट ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक पिकिंग करेंगे तो यू विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। एंड वी एज अ फंड हाउस वी बिलीव दैट we can create more value for our investors using our stock picking skills, right? Rather than giving you a few very अगर आपको लार्ज कैप्स में इन्वेस्टमेंट करना, सी लार्ज कैप्स मोस्टली हैव अ वेरी लार्ज बेस, एंड फॉर देम टू क्रिएट very significant returns for the investors on that large base is not that easy, right? So we feel that through stock picking we can find those value or growth opportunities where we can create value, we can create significant wealth through a disciplined investing over long term। So that's what we are doing as a fund house।
See, Sahil is asking a lot of news about bubble and recession coming in the US markets, downfall and unemployment trends, cyclic flow every 8 years up and down. Do you feel that it's happening in the next 1 year? Uh, see, अभी तक यूएस में अगर आप नंबर्स देखोगे तो मतलब नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट उसमें फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा के मतलब उसको जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है उसको कम करना चाह रही है, राइट? क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है. सो सी मतलब एज ऑफ नाउ यूएस में रिसेशन के चांसेस कम हैं, बट चांसेस हैं 2024 में, राइट? इस समय अगर आप देखोगे मतलब यूरोप में चांसेस है रिसेशन के, बट इंडिया तो अभी 7%, 6.5-7% पे ग्रो कर रहा है, तो वहां पे तो रिसेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, राइट? एंड हम एज अ मार्केट आइसोलेट कर रहे हैं. सी, हाई इन्फ्लेशन में जो जो पैसिव फंड्स हैं या जो बड़ा पैसा है, जो पेंशन फंड्स हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, उनको हाई इन्फ्लेशन में अगर अल्फा क्रिएट करना है और इंटरेस्ट रेट नीचे जाने शुरू हो गए हैं, तो उनको इक्विटीज में आना पड़ेगा. एंड इक्विटीज में जो कंट्रीज अच्छा कर रही हैं वो उसमें काफी बड़ा नाम आता है इंडिया. तो इंडिया विल डेफिनेटली सी अ वेरी लार्ज एलोकेशन कमिंग इन फ्रॉम दीज लार्ज मार्केट्स. एंड इंडिया में डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं, डोमेस्टिक ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट. तो देखिए, बबल का तो नहीं लग रहा है. मतलब देर इज, आई डोंट थिंक देर इज यूफोरिया और बबल और वैल्यूएशन उल्टी सीधी हो गई है या ग्रोथ नहीं दिख रही है इकोनॉमी में, या ऐसा तो नहीं लग रहा है. बट डेफिनेटली रिसेशन आएगा तो वो मार्केट्स पे इम्पैक्ट करेगा. हो सकता है मार्केट्स मतलब रिएक्ट करें, बट उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करेंगे. उस टाइम पे हो सकता है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स घटाना शुरू कर दे, राइट? तो हम ये मार्केट्स आर प्रेडिक्टिंग दैट एज वेल कि 2024 में यूएस विल स्टार्ट कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, which can be positive for the market. So see, इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है. बॉन्ड यील्ड्स पीक ऑलमोस्ट कर चुकी हैं, गिरी हैं. जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंट्रोल में है अभी इस पॉइंट इन टाइम पे. नंबर्स अभी ठीक आ रहे हैं ग्लोबली. तो अभी ऐसा कोई मुझे इशू नहीं लग रहा, बट डेफिनेटली देयर कुड मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट 1 साल 2 साल का इतनी अर्ली, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स प्ले कर जाते हैं, राइट? So that is what my thought process is. So Mandira Mahanti is asking, looking at the ongoing market scenario, what are the best mid cap and small cap stocks you recommend for a long term investment? See, I would recommend best small cap and mid cap stocks. I would recommend our small cases, right? We have our high quality right price, which is a mid cap portfolio, and we have our small cap compounders, which is a small cap portfolio. If you want to invest in small and mid cap, that is the best allocation as per us. So you can safely go and subscribe to our small cases. Sahil is asking, as a retail investor, a lot of people want to invest in newly launched small cases rather than going into the ongoing return making portfolios. What's your idea on this? See, having said that, see, एक तो इस point in time पे बहुत सारी opportunities नहीं है to create. I am a like value and growth investor, I am a fundamental driven investor. Momentum, I'll not be able to comment on that. Momentum तो anyways keep on changing, right? So अगर मैं fundamental driven, अगर तो it's a ऐसा नहीं है कि बहुत सारी opportunity है. ऐसा भी मैं तो अब मैं I also went on and saying that there might be scenario that we might allocate 10% into liquid Bs, right? So it is not that we have so many opportunities, first of all, right? So and second, having said that, if you look, as I talked about, if you look at our valuations of the small case versus valuation of the index, we keep on ensuring that the run up stocks are sold off, and we book our profits over there, and we allocate our capital into stocks where we feel that there's a lot of valuation cushion. So even despite the run up, we ensure that our investors keep on making more money over the future by through our own research and through our own rebalances, right? So we keep on rebalancing our portfolios considering these things, right? So as a investor, as a fund house, we are taking worry of that.
rather than see आप बहुत सारे थॉट प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखो, राइट? ऑल द लार्ज इन्वेस्टर्स हैव केप्ट देयर फिलोसफीज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी कंसिस्टेंट. अगर मैं आज एक कोई स्मॉल केस लॉन्च कर दूं, फिर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, मैं उसे बंद कर दूं, दूसरा लॉन्च कर दूं, फिर वो उसको थोड़े दिन चलाऊं, मार्केट कर दूं, पैसे मतलब बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस ले लूं, एंड देन फिर उसको बंद करके तीसरा स्मॉल केस लॉन्च कर दूं. दीज आर मार्केटिंग गिमिक्स, राइट? I think like it is more about the consistency and the discipline that we do as a fund house, right? कल को मेरी philosophy change नहीं होगी. जो मेरी philosophy है, I have to follow that philosophy with a discipline, and that's what we do, right? I cannot change my philosophy and launch new small cases every now and then. And the ones which are not working, I will close them off. For my new investors, it looks like the everything is performing for this manager, but see, we are the only ones, and we are very proud of that, that we consistently like have maintained our small cases, and we believe in our philosophies, right? So and for you, we keep on doing the reallocations where we ensure that there is a valuation cushion for a run up in the future. So you need not worry about that. Right? I hope I answered your question. See, Sumukh is asking for long term, is HQRP better or small cap compounders better? See, these are both same philosophies, and small cap is slightly higher risk because there are slightly smaller companies. Mid cap is slightly lower risk because they are slightly higher companies. So higher risk, higher return. Mid caps में भी return बहुत अच्छे आएंगे, but वो slightly lower risk है, right? So what I would suggest is you create a mix of both the portfolios. The overlap in both the portfolios is not there, right? So high quality right price and small cap, I think, is a good combination of small cases that you can take to diversify across this small and mid cap allocations through our research, right? So Shivai is asking, most of the mutual fund money is coming into small cap and most of the people are preferring small caps. Is small cap going to be overvalued? See, अगेन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी मतलब हर टाइम पे मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहती है, राइट? कभी लार्ज कैप बहुत अच्छा करते हैं, कभी स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, सेक्टर वाइज भी अपॉर्चुनिटी रहती है. जैसे हम बात कर रहे थे कि फार्मा नहीं चला एंड फार्मा आगे आने वाले समय में चलेगा, राइट? तो सेक्टर वाइज बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है. फिर सेक्टर के अंदर कंपनी वाइज बहुत अपॉर्चुनिटी रहती है कि जैसे कुछ सेक्टर में कुछ कंपनी चल गई, कुछ कंपनी नहीं चली, है ना? तो ऑल द टाइम, सो एज अ फंड हाउस यू हैव टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग दैट व्हिच सेक्टर्स आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, व्हिच कंपनीज आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, व्हिच टाइप ऑफ मार्केट कैप इज गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, एंड वी आर नॉट averse to large caps. If we see good value in large caps, we will buy. We have bought a lot of large caps in the past as well. हमने टाटा केमिकल खरीदा, हमने कुछ अडानी कंपनी बहुत पैसा कमाया है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमने लार्ज कैप्स खरीदे नहीं इन द पास्ट. हम बॉश खरीदा है, हमने बहुत सारी कंपनीज खरीदी हैं ऐसी. बट सी, वी हैव टू फील दैट देयर इज अ गुड वैल्यू टू बी क्रिएटेड इन दोस कंपनीज, राइट? इफ they are valued at very high levels, for us to create alpha over there, it will be very difficult. And as a fund house, we want to create alpha for our investors, right? Rather than giving you very plain and vanilla Kotak, TCS, Wipro, SDFC, we would want to do our research and bring through our stock selection, bring out ideas where there is a good value creation or a good alpha that we can create for you. So Shivai, I hope I answered your question. That see, it is not that small cap is going to be overvalued. It is that it is about stock picking, and we will keep on evaluating. And if we feel that there are less opportunities in small cap, we might even sit on cash. It will not be shy on doing that, right? But at this point in time, we have ample opportunities where we feel that अच्छा पैसा बन सकता है. एंड अभी इकोनॉमी में यूफोरिया नहीं है, अभी इकोनॉमी बहुत अच्छी लग रही है. आगे आने वाले 10 साल तो बहुत ही अच्छे हैं. हो सकता है 4-5 महीने वॉलिटिलिटी रहे, हो सकता है ऊपर नीचे करे मार्केट, एंड दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. वी कैन ओनली स्टे इन्वेस्टेड एंड वी कैन स्टैगर मोर व्हेन वी सी सम रेड डेज इन द मार्केट, डीप रेड डेज इन द मार्केट, right? So I think that is the philosophy, and I hope I answered all your questions. I think and it has been a pleasure like talking to you all. We are reachable. आप हमें smallcase@greenportfolio.co पे email कर सकते हैं.
we also have our relationship managers who can like answer your individual questions. You can reach out through our website. Uh, and anything and everything. I am also reachable. I am reachable on social media. I am reachable on through the my details are there very much on the website as well. So आप anytime anything, we are see we want to as a fund house, our thought process is that we want to serve the retail investors who are not served by the large funds in a customized manner, and we want to do that for you in a very customized manner. We want to work closely and create wealth for our retail investors over the years, and we want to walk holding hand in hand. So anything and everything related to your investments, whatever ways we can help, we would be happy to do that. And that has been our thought process, and we want to serve retail investors and create wealth for them. So thank you so much on spending your precious time on this Sunday, and looking forward to see you soon in such a session, and looking forward to interacting with all you guys soon. Thank you so much.